A very good morning, dear students. Welcome to e-learning classes of Sacred Hearts. Dear students, in the previous lecture of business studies, we have discussed about the second element of marketing mix, and that was price. Today, in our 51st lecture, we are going to discuss about the third element of marketing mix, that is the place. Dear student, the very first question arises in our mind: what is the place concept in the concern of business studies? So, place refers to the set of decisions that need to be taken in order to make the product available. That means place is something related to the availability of the product in the different concern places. If the products are not made available to the customer at the right place in the right time, then obviously the consumer will be unable to purchase the particular product. That is why the place element used to play a very important role in the success and failure of a particular business. Now, the next concept is the place mix. Place mix refers to the important decisions related to the physical distribution of goods and services. Place mix क्या है बेटा? प्लेस से रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं, ऑल दोज कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ द प्लेस मिक्स. दीज डिसीजंस आर डिसाइडिंग द चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. इसमें इंक्लूड होता है चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को डिसाइड करना, ठीक है, मार्केट में क्या स्ट्रैटेजीज होंगी फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन एक्सेट्रा. सी फर्दर, प्लेस मिक्स इंक्लूड्स टू एलिमेंट्स आर देयर. फर्स्ट एलिमेंट है आपका channels of distribution, and the second one physical movement of goods, and to these two elements we are going to discuss them in the detail. The very first is the channels of distribution. So dear students, what is the channels of distribution? It refers to the people or the middleman who helps in the distribution of the goods. So all those people, all those mediators, intermediaries who helps in the distribution of goods from the producer to the ultimate consumer comes under the concept of channels of distribution. गुड्स आर प्रोड्यूस एट वन प्लेस. वी ऑल नो दिस कि गुड एक पर्टिकुलर प्लेस पे प्रोड्यूस होता है, लेकिन उसके जो बायर होते हैं, जो कंज्यूमर्स होते हैं, वो डिफरेंट प्लेसेस पे क्या होते हैं, स्कैटर्ड होते हैं. चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मेक शॉपिंग ईजी फॉर द कंज्यूमर्स. कंज्यूमर्स के लिए शॉपिंग करना ईजी होता है थ्रू चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, एंड इट बिकम्स ईजी फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स फॉर द प्रोड्यूसर एज वेल. इसके थ्रू क्या होता है, जो प्रोड्यूसर्स हैं वो भी ईजिली अपने गुड्स को क्या कर पाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर पाते हैं इन द मार्केट, अपना मार्केट स्टैब्लिश कर पाते हैं. सी फर्दर टॉपिक, दैट इज द चैनल लेवल्स. Now about the channel levels. So if we talk about the channel levels, then there are two types of distribution levels. The very first is the zero level, that is also known as direct one, and the other one is the indirect one. Initially we will discuss about the zero level channel or the direct channel. It is a case when firm sell their products directly to the customer. That means there is no in between mediator over there. Good is produced and then ultimately sold out to the consumer without any mediator. For example, Bata sell their shoes directly. देर इज़ अ कंपनी बाटा, वी ऑल नो अबाउट इट. जो बाटा है वो अपने गुड्स को क्या करती है, अपने जो शूज़ हैं, जो भी उनके लेदर प्रोडक्ट्स हैं, जो भी उनके प्रोडक्ट्स हैं, उनको क्या करती है, डायरेक्टली क्या करती है, कंज्यूमर को सेल आउट करती है. इन द सेम वे यूरोका फॉब्स इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ द ज़ीरो लेवल चैनल और द डायरेक्ट चैनल. सी फर्दर, कॉमन टाइप्स ऑफ डायरेक्ट चैनल्स आर. जो डायरेक्ट सेलिंग होती है, जो डायरेक्ट चैनल है, उसके सम कॉमन टाइप्स कौन कौन से हैं. फर्स्ट वन इज़ द डायरेक्ट सेल बाय अपॉइंटिंग सेल्समैन. क्या होता है, डायरेक्ट सेल्स थ्रू द हेल्प ऑफ सेल्समैन. सेकेंड, थ्रू मेल ऑर्डर हाउस, दैट इज मेल ऑर्डर रिटेलिंग, दैट वी हैव डिस्कस इन द क्लास 11th. देर आफ्टर थ्रू इंटरनेट, that is the shopping sites, and the last one through tele shopping, that means the shopping that is being conducted through the telephone. So this is all about the direct level. Now we will discuss about the second one, that is the indirect channel. In this, the very first one is and what is the indirect channel? The channel in which there is no direct contact between the manufacturer and the consumer. This is known as the indirect channel, and there are three types of channel in the indirect channel. The very first one is the one level channel.
और इस चैनल में क्या होता है बेटा, इन दिस चैनल ओनली वन इंटरमीडियरी इज अडॉप्टेड, सिर्फ एक इंटरमीडियरी होता है, एंड दैट इंटरमीडियरी इज द रिटेलर. दैट मीन्स आपका पहले मैन्युफैक्चरर आता है, देयर आफ्टर आपका रिटेलर आता है, और रिटेलर के बाद आपका अल्टीमेट कंज्यूमर आता है. फॉर एग्जाम्पल, कार्स आर सोल्ड थ्रू द डीलर्स. जो कार हैं वो किसके थ्रू सेल आउट होती हैं, डीलर के थ्रू. तो मैन्युफैक्चरर, देयर आफ्टर डीलर, एंड देन अल्टीमेट कंज्यूमर. इन द सेम वे द एक्सपेंसिव वॉचेज आर ऑल्सो सोल्ड आउट इन द वॉच शोरूम. तो वो मैन्युफैक्चरर, वॉच शोरूम, एंड देन अल्टीमेट कंज्यूमर. सो बीच में सिर्फ कौन आ रहा है, सिर्फ एक मीडिएटर आ रहा है. The next one, that is the two level channels. If we talk about the two level channel, then it is the one of the most common level of channel that is being adopted by the different firms to sell their products, in which there is two mediators or intermediaries are there. The first intermediary is the wholesaler and the second intermediary is the retailer. So the manufacturer used to sell the goods in bulk to the wholesaler. Thereafter, wholesaler used to sell the goods in the comparatively small lots to the retailer, and then retailer used to sell the goods to the ultimate consumers. ठीक है, ये हमारे क्या है, टू लेवल चैनल्स है. जनरली द कन्वीनियंट गुड्स और द कंज्यूमर गुड्स आर सोल्ड आउट थ्रू द टू लेवल चैनल, जिसमें कि हम लोग बात करते हैं सोप, सॉल्ट, द फर्दर shampoos, all etc. All these are distributed through the two level channels. Thereafter come the next one and the last one, that is the three level channel. एंड इफ़ यू टॉक अबाउट द थ्री लेवल चैनल, तो इसमें एक और जो मीडिएटर है, जो मिडल मैन है, वो ऐड होता है, एंड दैट मीडिएटर और द मिडल मैन इज नोन एज एजेंट और डिस्ट्रीब्यूटर. सो इन दिस देर इज इनिशियली द एजेंट, thereafter wholesaler, and thereafter retailer, and then retailer used to sell the goods to the ultimate consumer. When the products are distributed in the deep corner, जब हमें प्रोडक्ट्स को ऑल ओवर द कंट्री बहुत डीप वे में क्या करना होता है, डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, इन दैट कंडीशन द डिस्ट्रीब्यूटर्स और द एजेंट्स आर अपॉइंटेड. उस कंडीशन में जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जो एजेंट्स हैं, उन्हें अपॉइंट करते हैं, एंड दे यूज टू लुक आउट द ऑल सेल्स मैटर इन देयर region. For example, North India distributor and South India distributor, etc. Now the next topic, that is we can see before coming to the next topic, this is there is a diagram. We can see the all level channels over here. Zero level, directly from manufacturer to consumer. Thereafter one channel, then one mediator is there, manufacturer, retailer, and then consumer. In two level, two mediators are there, manufacturer, first mediator wholesaler, second mediator retailer, and then ultimate consumer. And three level, in which three mediators are there, manufacturer, then first mediator agent or distributor, second mediator wholesaler, third mediator retailer, and then ultimate consumer. Now coming to the next topic, that is the components of physical distribution. Physical distribution के कौन कौन से components हैं या फिर decisions in the physical distribution. So there are basically four elements that are paid more concern in this topic. The first one is the order processing. And what is the order processing, beta? Order processing means the time and steps involved between taking order from customer and delivery of the goods as per the order. ठीक है, जो ऑर्डर प्रोसेसिंग क्या है कि दैट दिस इज़ द टाइम एंड स्टेप्स इन्वॉल्व. जितने भी टाइम और स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं किसमें, फ्रॉम टेकिंग द ऑर्डर फ्रॉम द कस्टमर, जब आप ऑर्डर ले रहे हैं कस्टमर से, और जब आप उसको क्या कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इन मिड बिटवीन जितना टाइम लगता है, जितने स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, ऑल दोज आर नोन एज द ऑर्डर प्रोसेसिंग. सी फर्दर, जनरली द ऑर्डर प्रोसेसिंग इन्वॉल्व्स, इसमें बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं. सम ऑफ द स्टेप्स आर हेयर, कुछ स्टेप बताएं उसने. फॉर एग्जाम्पल, ऑर्डर प्लेसमेंट टू सेल्समैन, ऑर्डर ट्रांसमिशन बाय सेल्समैन, आपने सेल्समैन को ऑर्डर दिया, सेल्समैन ने ऑर्डर ट्रांसमिट किया कंपनी को, क्रेडिट कार्ड प्रिपरेशन एंड सो ऑन. ठीक, देयर इज डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन द टाइम टेकन इन द ऑर्डर प्रोसेसिंग एंड द सेटिस्फेक्शन ऑफ द कस्टमर. इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन. किसके बीच में, ऑर्डर प्रोसेसिंग एंड between the customer satisfaction. If there will be the fast order processing, then obviously the satisfaction level will be the high one, and the vice versa. Now the second element, that is the transportation. And what is transportation? It means physical movement of goods from the place of production to the place of consumption. We all know this. There are various means of transportation available, different modes हैं, rail, road, air, pipeline, water transport, etc.
ईच मोड हैज़ इट्स ओन एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज. हर एक मोड के अपने एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस हैं. दीज मोड्स आर इवेलुएटेड एंड कंपेयर्ड ऑन बेसिस ऑफ. इनको क्या करना चाहिए, आपस में कंपेयर करना चाहिए. कौन से बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, कॉस्ट एक्सेट्रा, है ना. इन सब बेसिस पे इनको कंपेयर करने के बाद द बेस्ट मोड सिचुएटेड, जो भी आपको लग रहा है कि ये मोड आपके लिए बेस्ट रहेगा, आपके अकॉर्डिंग बेस्ट रहेगा, उस मोड को क्या करना चाहिए, सेलेक्ट करना चाहिए. कोई भी हिट एंड ट्रायल नहीं होगा. एवरीथिंग मस्ट बी टेकन वेरी रैशनली. Now the next one, that is the warehousing. We all know warehousing is a facility that used to keep the goods safe till the from the time of production till the time of consumption. So most of the companies are needed with the help of the warehousing facility. And maintaining stock in the warehousing involve cost. We all know that if we are hiring the warehousing or we are using the warehousing service, obviously some of the cost will be involved, whether it is the warehouse of the company, own warehouse of the company, or it is the hired warehouse. So firm must compare the costs involved in using the warehouses. तो firms को क्या करना चाहिए, जितनी cost involve हो रही है और जितना उससे benefit मिल रहा है उसे आपस में compare करना चाहिए, and then try to have the proper decision. And the next and the last one, that is the inventory. And what is inventory? Inventory refers to maintenance of stock of goods. क्या करना, goods का stock maintain रखना, so that whenever the need is there, that can be fulfilled through the proper and regular supply. The proper inventory maintenance ensures product availability. अगर आपके पास proper inventory होगी तो आपके product की जो availability है market में वो proper बनी रहेगी. But इन्वेंट्री ऑल्सो इन्वॉल्व कॉस्ट. लेकिन इन्वेंट्री मेंटेन करना भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता बेटा, इसमें भी क्या होती है, कॉस्ट इन्वॉल्व होती है. एंड दीज इंक्लूड द कॉस्ट ऑफ कैपिटल ब्लॉक. और उसमें क्या इन्वॉल्व होती है, जो आपकी कैपिटल ब्लॉक हो गई दैट उस टाइम के लिए. एंड देयर आर द चांसेस ऑफ द प्राइस फ्लक्चुएशंस एज वेल. तो ये वो रिस्क हैं जो कि आपकी इन्वेंट्री के साथ क्या होते हैं, एसोसिएटेड होते हैं. सी फर्दर, द फर्म मस्ट वेट द बेनिफिट्स. फर्म्स को बेनिफिट्स को और जो कॉस्ट इन्वॉल्व उसे कंपेयर करना चाहिए. Now there are some factors which help in the determining the level of inventory are firm की policy on the customer services, degree of accuracy of sales forecast, thereafter responsiveness of the distribution system, and cost of inventory. All these are the factors that are kept in the mind while determining the level of inventory. कि आप कितनी इन्वेंट्री मेंटेन करेंगे अपने पास, इन्वेंट्री मेंटेन करेंगे भी या नहीं करेंगे, ज़्यादा मेंटेन करेंगे, कम मेंटेन करेंगे. इट डिपेंड्स अपॉन द ऑल दीज 4 फैक्टर्स. कौन से फैक्टर? फर्म की पॉलिसी ऑन द कस्टमर सर्विस, डिग्री ऑफ एक्यूरेसी ऑफ सेल्स फॉरकास्ट, responsiveness of distribution system, and the cost of inventory. So this is all about today beta. Today we have discussed about the third element of marketing mix, that is known as price or physical distribution, in which we have discussed about place. Thereafter we have discussed about the place mix. Thereafter channels of distribution, direct and indirect channel, and the last one, that is the components of physical distribution. This is all about today. Thank you very much. God bless you all.